ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਨ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਟੋਪਾਪਸ। She is PhD from University of Maryland in ethnomusicology, and she did her dissertation in Gurmat Sangeet at Punjabi University, Patiala. Her book on Gurmat Sangeet dissertation was published by Punjabi University in the year 2013, and मैनू बड़ी खुशी है कि ये मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने आज इन्हों ने साडी रिक्वेस्ट मन्नी ते आज ये साडे स्टूडियो दे विच साडे नाल रूबरू होणगे। थैंक यू एंड वेरी वेलकम to Chardhi Kala Time TV studio. Oh, it's my pleasure to be here. Our audience would love to know first, like many years back you came to India. What brought you to India first? It's really my pleasure to be here. It's many years, I think, in the making. I first came to India about 30 years ago when I came on a university program through the University of Wisconsin, and I studied in Varanasi. And I had the opportunity to study Shastriya Sangeet and Sanskrit and also Hindi. And somehow the music and the culture and the language just really captured me. And I knew that I'd have to come back repeatedly to gain more wisdom and more knowledge. And eventually I came back for my master's and did my research on Prachin Sanskrit Shiksha. Very nice. And I went to many gurukulams and pathshalas and spent a lot of time with the brahmacharis. Oh, wow. And somehow, as one of my professors in my doctorate program said, she said, the real research you're doing is inner research. And I truly felt that I was stepping back into very deep old memories, a very deep part of my soul. And consequently, you know, this is a story, this book that has been published is the culmination of 30 years of love, a love relationship with India. Very nice. I understand कि आप बहुत अच्छी हिंदी जानती हैं और आपने काफ़ी समय वाराणसी में बिताया है, तो हमारे दर्शक भी आपसे थोड़ी हिंदी सुनना चाहेंगे। आप उनसे हिंदी में बात करके ये बताएं हमें कि आप USA से इंडिया आ गए। हाँ जी। You got introduced to Indian classical vocal music. You got introduced to Indian instruments, string instruments, and you learnt the language, local native language. How you were introduced to Sikh religion and Gurmat Sangeet, the entire process, how it happened in Hindi, please. हाँ, ये तो पहले ये तो गुरु की विचार है। तो वैसे हम समझते हैं कि हम शास्त्रीय संगीत में वो भजन, हमारे गुरुजी हमको कुछ भजन भी सिखाते थे। और वैसे ही भजन के अंदर कभी कबीर की भजन है या तुलसीदास, और इसका भाव हम बहुत पसंद था। कबीर की उसका भाव, उसका जो रस है, जो प्रेम भगवान से इतने अच्छा लगता था। तो वैसे ही कि अमेरिका में थे, वो एक अमेरिकन सिख था, वो कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो गुरबानी नहीं आते थे। मैंने बोला कि हम भी गुरबानी नहीं आते हैं, वो हिंदी कुछ संस्कृत जानते हैं। तो उसने बोला कि ठीक, आप गाइए। जब हम अंग्रेजी में गुरबानी की अनुवाद देता है, आप तो हिंदी में तो गुरबानी आप प्रोनाउंस कीजिए। तो इसी तरह हमारी एक्वेंटेंस गुरबानी से शुरू किया, और बाद में जब हमारी PhD शुरू किया वो एथनोम्यूजिकोलॉजी में, तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा, बहुत गंभीर विषय में रिसर्च करना चाहते थे। और शास्त्रीय गीत हम बहुत पसंद था, लेकिन मैंने सोचा कि हम चाहते थे एक संगीत जिसमें हम हमारी भक्त बहुत डूब कर सकते हैं। Yes. हाँ, और अगर कोई रिसर्च करते हैं, जिस चीज में रिसर्च करते हैं, इसमें एकदम डूबना, Yes. जब तक अपने आप भूलते हैं, कुछ नहीं बाकी है। तो इसी कारण से शास्त्रीय और गुरमत संगीत में इंटरेस्ट किया, क्योंकि अमेरिका में अब उसी समय किसी लोग इसमें रिसर्च नहीं कर रहे थे। Yes. तो yes. very nice. मैं अपने दर्शकों में दसना चाहांगी कि डॉक्टर गुरलीन कौर गुरमुखी पढ़ लेंदे ने, और मैनू बड़ी ही इंप्रेसिव एक गल लगी कि ये बाहर तो आके एक विदेश विच पैदा होए, एक अलग संस्कृति, एक अलग
ਰਿਲੀਜੀਅਸ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਸ਼ਲ এনवायरमेंट ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ USA ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਮਾਈਲ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ मतलब कोई इन्होंने मनी नहीं चार्ज कर दे, कोई लोगों तो पैसा नहीं मंगते, बिल्कुल फ्री सर्विस है। कंट्रीब्यूशन टू द रिलीजन, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, वेलफेयरली लोगों दे ये काम करते हैं। और बहुत बहुत तुहाडा शुक्रगुजार हाँ असी कि तुसी इन्हां सोसाइटी दे वेलफेयर वास्ते काम कर रहे हो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट यू टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली? Well, I've been very fortunate. ये मेरे भाग्य की बात कि हमारी परिवार वो बहुत धार्मिक है। हमारे पिताजी वो वैसे रागी थे, रागी है। वो क्रिश्चियन चर्च में वो मिनिस्टर ऑफ म्यूजिक थे। तो हमारे बचपन से हम भी संगीत और भक्त ये दोनों साथ, इसमें बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो वैसे हमारी पीढ़ी, हमारे पिताजी वो हाँ संगीत वो टीचर था, अध्यापक थे और चर्च में वो भी गायक थे। और अपने बेटी वो भी एक दो बच्चे हैं। हमारी बेटियां वो वायलिन अच्छी तरह बजाते हैं। उसका जन्म भारत में हुए और वो भी भारत बहुत बहुत पसंद है। तो उसका पिताजी वो सितार बजाते हैं। तो मतलब कि हमारे घर में संगीत चलता है, संगीत बहुत मुख्य है। Tell us about your project on Gurmat Sangeet and your journey on this book. I think you're carrying the book with you. Can we see that? I do have it right here. Let's show it to our audience. This is the book written by Dr. Jane Gurleen Kaur Protopappas, and this book says Sikh Shabad Kirtan, the musicology of sacred memory. What is this, the musicology of sacred memory, means to you? It definitely was a journey. There is a very important word I'd like to use here. It's called phenomenology. Phenomenology comes from Western philosophy, and it's how we experience things in time and place. So I knew that to understand Gurmat Sangeet, I had to be in a position where I could taste it, I could hear it, I could smell it, I could touch it, I could perceive it with all of my senses. So consequently, the form of research I did was called ethnographic. This is where you do a lot of participant observation and interviewing, and you become as much a part of the community as possible. You understand it. So I would spend a lot of time speaking to people, and often not like people in, the high officials in Gurdwaras, but it was the local people. I would speak to people on buses, and people in fields, and people in tea stalls. Because those were the kind of people who really I wanted to understand Gurmat Sangeet, Shabad Kirtan, from the layman's perspective. But along with that, I spent a lot of time at the university studying Sikh musicology under the guidance of Dr. Gurnam Singh and his staff. And because I had studied Shastriya Sangeet, I already had a very good understanding of Raga and Tala and Rasa. But along with that, the whole beauty of Gurmat Sangeet, unlike Shastriya Sangeet, it is deeply steeped in the tradition of bhakt and reverence. And so any opportunity to sing kirtan is not about any self-awareness, or any self-praise, but it's really about prayer and worship. So I had the opportunity to, again, to go to a lot of gurdwaras, to learn the system of music, and to, again, write about it. Dr. Saab, I have a question. If one of our audiences or someone wants to read this book or go through the book or purchase the book, what's the best way to get this book?
I suppose it would be to contact Punjabi University in Patiala. They were the publishers of this book, so they should be able to carry any copies that you may request. Okay. Our audience and including me, we have heard about musicology. What is ethnomusicology? Ethnomusicology takes music and puts it in a context. Instead of like a performance hall where you go and hear a piece of music, every single individual is part of that performance. The beauty of going to, I spend a lot of time at Darbar Sahib recording and notating the whole service, the whole Kirtan Chaunkis from the Asa Diwar Chaunki to the Arati at the end of the day. And had a lot of opportunity to witness not only what is sung, but what is recited, what is said, and all the interactions that take place throughout the whole performance of Shabad Kirtan. How would you put in words the contribution your book offers to the academic community, to the society? I think what it offers to the both to the Western and to the Indian academic society is an opportunity. Well, part of the book has binotational recordings, so it has actually some of the Shabads with Western notation. It also offers, again, I don't think at this point anybody has looked at Shabad Kirtan, Gurmat Sangeet, from an ethnomusicological perspective. People usually focus just on the music or the historical context, but seeing how it interacts with the day-to-day life of individuals, how it becomes a meaningful part of the whole life cycle from birth to death. So I think that in that way, it is a new lens from which to understand Gurmat Sangeet. Your contribution is immense to the society in terms of providing a new lens and a different vision and version of musicology. And our audience must be excited to know what's your next project. Well, at this point, I'm going to be writing a paper comparing Gurmat Sangeet with Christian church singing and the benefits, looking at the contrasts and the similarities between both of these systems of not only music but congregational involvement. And this is for a seminar that's going to be taking place in Amritsar in October. Oh, very nice. Can we have the privilege to hear a few lines of Gurmat Sangeet from Guru Granth Sahib or from your Shastric Sangeet if you want to? Whatever you feel like for the audience. Okay, this is one of my favorite Shabads. I had the chance to sing this at a Sammelan at the Punjabi University for their Gurmat Sangeet Sammelan several years ago. And I felt so privileged to be able to participate in this. And it's in Rag Govind, one of my favorite rags. It's a very, very simple composition. Moko tarale, Rama tarale, me ajan jana tarabe na jano. Bab Bitula Bahade. Would you like to hear a little bit? Absolutely. Okay. Moko tarile, Rama tarile, Moko tarile, Rama tarile, Mea jana jana tarbe na jano, Baba Bitula Bahade, Moko tarile, Rama tarile. Very nice. Thank you so much. I'm left with no words to express my gratitude. That's immense pleasure to have you here to listen to the story and your contributions to the society. मैं डॉक्टर गुरलीन कौर ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਸਾ-ਪਾਸਾ এনवायरमेंट ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।